Hello everyone. Today I'm going to make a video about twin flame related topic and also a little bit regarding love related topic. I'm actually in a hotel because I am not being able to live in Mumbai because of the pollution there in the Mumbai and Navi Mumbai area. And I went a little up north in Rajasthan, where I thought at least the pollution levels were showing less air pollution. So I figured there might be some little lesser pollution over here. But while the air pollution is indeed much lower than in Mumbai or Navi Mumbai, and the two places that I have visited so far, one place has about one third the pollution of Navi Mumbai, and the other place had about one fourth the pollution in air. But the water pollution over here is high because of the chemicals we use, and also there are some other things going on here in the environment, causing a lot of fungal infections also to propagate here. And same is also true of Mumbai, Navi Mumbai, and that's one reason I left there, because the food was getting spoilt. There was a heat wave going on, and in the heat wave my use of ACs is really high, and I didn't wish to continue using a lot of AC. So right now I'm in a forest like area where because it's cooler in the night, I don't have to use the AC as much, but it's still warmer in the daytime because of the chemicals humans use here in this area. Some include mosquito repellent, some you include the cleansing chemicals that most hotels are using, and some include the soaps and shampoos that we bring or the hotels bring. Some include the chemicals like sunscreens that people use in the summertime. All of this gets washed into the local water systems and then ends up polluting the water, and we then end up drinking that water, having a bath in that water, cleaning our clothes in that water, all of which again then adds to the toxicity in our body. And there was a twin flame reading that I had seen many months back of some other person who helps twin flames, and in that she was giving guidance to this girl to not go and sleep with her twin flame. But that girl, when she met her twin flame for the first time, the need within them was such that they had ended up sleeping, and then they ended up breaking up with each other. Now, seeing that video, I partly agreed and disagreed with the recommendation given to that girl, because there are two parts to it. The part that I agree with is true, that one should take caution when in a relationship with anyone, and especially if it's a very deep bonding filled relationship where we are very much attracted to someone else. It is better if we can pace ourselves and aren't moving really fast and aren't trying to connect energetically or sexually with someone else. And then the second part to it is that we live in India, where people anyways judge women a lot if they sleep around. So the teacher who was guiding this girl was partly giving the right advice. And the second part to it that came to me when I was hearing it, because I have a sixth sense that was developing for me, is the fact that that girl actually, or the guy, or both of them, actually likely got also impacted by the fungal infection that was prevalent in the hotel where they stayed when they met for the first time, or after many months or years. I don't know their history, but they had met there and they had slept. And most hotel rooms that I have visited in my travels, when I was not in a heightened state of awareness, at the time I didn't perceive anything wrong with the hotels, except like, okay, how great are they maintaining the hotel, whether they have good amenities, whether they give food, whether they have clean premises, whether it's free of pests and all those things. But now that I have become more sensitive to things, any kind of chemicals in the environment and toxins in the environment, I can read about certain places.
or certain people. So I felt in when hearing their messages that either one or both of them got impacted by a fungal infection. And if there is heightened levels of fungus, not only in our body but in our environment where we are living, or we are having sexual intercourse with someone in that environment, what happens is, if you have high enough toxins inside your body, like I'm coughing right now, your body will try to expel that toxin. Like when I'm coughing, there's something stuck in my throat that my respiratory tract muscles are trying to expel out by coughing it out. Now, this can be a physical toxin, it can be a chemical toxin, it can be physical toxin in the form of a fiber or asbestos dust or talcum powder dust or cement dust, and it can be a hairball. Those are all physical particles, or plastic microparticles. These are all the physical toxins. Then the chemicals ones could be something in the environment, something which we are using, like mosquito repellent sprays that we are using. Those could be the chemical toxins, or any kind of chemicals that were there in the air of this whole locality that I am inhaling. That could be something my lungs might want to expel out. And then there are biological toxins in the form of microbes and funguses and bacteria. So when this couple mentioned that they had a huge fight after they had met in the hotel and they had slept with each other, part of it, I agree, is possible that it was the intensity of the sexual relationship that can sometimes cause men to shut down. I have experienced that in the past, in my past relationships. And though I have not had consciously in my memory, I don't remember having a physical intercourse with anyone, but I have had sexuality based relationships with people. So because of the certain people whom I have dated, I have found that the sexual intensity was very high with them. And because the sexual intensity was high, when a man gets pleased, sometimes if they are only connected with you in the sexual level and are not as much connected at the emotional level, they shut down. Or sometimes if they are connected too much with you at the emotional and sexual level, but they didn't have a happy family life, then also they can shut down. And instead of expressing love towards their partner, they will express it in the form of anger. And combined with all this, so there could be a possibility that when this girl slept with this guy, and this guy fought with her after sleeping, he got triggered because of whatever emotional issues they had in their relationship, or whatever emotional issues he had in the past. So these are the triggers that could impact someone. But there's a third kind of trigger that people don't realize, is the trigger that happens when our body is toxed out with chemicals or microbes, and when our body has this toxins inside of us and we are sexually interacting with someone, we exchange energy with them. And when this energy gets exchanged with them, any of those partners who might have had some infection going on, or if the environment in which they are doing the sexual act had really high toxic environment there, will impact their energies. And because microbes, chemicals, physical toxic agents, all of it can impact our chemical neuronal pathways. They can impact multiple organs in our body. And what that guy could have been doing if he got impacted by the fungus in that room, or he might have already had some fungal infection, or the girl could have had an infection, and or they both could have had an infection, and when they met they gave each other a worse form of infection because they both had an infection and they had an energy exchange. All of this combined can add to the toxic level in our brains. And when our brains have reached a certain level of toxicity, then our brain just doesn't function, and we can become angry, we can become agitated, we can have chemical responses in our body that can cause neuronal pathways to flare up in such a way that anxiety, agitation, anger comes up as a response to whatever toxins are in our body.
And in India, there's a lot of pollution, there's a lot of chemical pollution everywhere, not just in hotels, in our homes too. So that's why there's a high chance that this couple who were from India had the chemical toxins in their body, in their environment, in the interaction they had with each other, and the biological feelings that they were feeling for each other, which had some unhealed trauma inside of them, causing them to behave like that with each other. So that's why the girl had got this guidance that it would have been better if she didn't sleep with someone in the first meeting, or the first real long term separation later meeting. But despite that, there are people who will, sleep around, or who will wish to connect to their twin flames, or wish to connect to whoever they love in a physical way. But because there's a lot of harm going on in the environment in India right now, I would recommend, like this teacher, that when you are sleeping with someone, make sure your environment is clean, make sure your body is clean, make sure your mind and spirit is clean when you are trying to sleep with someone. And not just yours, you have to also develop the capacity to understand your partner and understand whether their mind, body, soul, spirit is also at a cleaner level. Because if we don't match up in the same level with our partners, that's when the clashes happen, and we will reject another person because of either the emotional turmoil inside, कि अगर हमारे अंदर अनहील्ड ट्रॉमा है, अगर हम किसी के साथ पास्ट में हमारे बुरे रिलेशनशिप्स हुए हैं, एंड देन हमको एक अच्छा पर्सन तो मिल गया है, डिवाइनली गाइडेड पर्सन भी मिल गया है, बट इवन दो दैट पर्सन इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड वो अच्छा इंसान है और हमारे लिए मैच है अच्छा भगवान के अकॉर्डिंग, बट अगर हमारा माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट क्लीन नहीं है, या उतने क्लीन लेवल में दोनों कपल्स का नहीं है, दोनों पर्सन्स का नहीं है, तो जब वो एक दूसरे के साथ सोएंगे तो उनके एनर्जीज़ इम्पैक्ट हो जाते हैं, इसलिए एंड गलत तरह से एनर्जीज़ मिंगल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशनल ब्रेक डाउन हो सकता है। और नॉट जस्ट गलत तरह से, कभी कभी आपका इमोशनल ब्रेकडाउन तभी भी होगा जब आपका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट होगा। बिकॉज तब क्या होगा कि अगर सब कुछ परफेक्ट है, आपने माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट, आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन, सब कुछ क्लीन है, फिर भी आप एक दूसरे से मिले, बट थोड़ा सा तो आपके अंदर अगर कुछ क्लेश है पुराने रिलेशनशिप्स के ऊपर, या चाइल्डहुड ट्रॉमास है किसी को, या पोस्ट पीटीएसडी लाइक सिम्टम्स है किसी को, या उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, उनका एज अ पर्पस ओनली एज अ ट्विन फ्लेम शायद ऐसा कुछ हो कि उनको कुछ जनरेशनल एंसेस्ट्रल कर्सेस को ब्रेक करना है, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करना है, कुछ पेट्रियार्कल पैटर्न्स को ब्रेक करना है, कुछ मेट्रियार्कल टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक करना है। लाइक पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, फेमिनिन, मैस्कुलिन एनर्जीज में सम टॉक्सिक पैटर्न्स आर एग्जिस्टिंग करेंटली इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई ओनली भगवान चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स मिले और मिलके एक दूसरे को हेल्प करे वो समझने में कि क्या टॉक्सिक पैटर्न्स हैं हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे खुद के लाइफ में, हमारे खुद के सोच में, विचारों में, खुद के आचरणों में दूसरों की तरफ। ये सब को हील करने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स आए हैं। और इसीलिए जब आपका कोई ट्विन फ्लेम के साथ, या इवन अगर वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई पोटेंशियल ट्विन फ्लेम पर्सन था, उनके साथ अगर आपका झगड़ा हो गया है, या फाइट्स चल रहे हैं आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, और फाइट्स चल रहे हैं इन अ वेरी इमोशनल रिलेशनशिप, दीज आर ऑल पैटर्न्स जो हमारे अंदर हैं, हम आए हैं उसको ब्रेक करने के लिए। अब वो अगर राइट पार्टनर मिलेगा तो वो राइट पार्टनर ट्विन फ्लेम के साथ आप मिलजुल के ब्रेक कर पाओगे। पर अगर वो आपका फॉल्स ट्विन पार्टनर होगा या सोलमेट पार्टनर होगा, कभी कभी वो लोग आपके लेसन्स होंगे, और इसीलिए आपके झगड़े होंगे कि जिस रिलेशनशिप में आप सिर्फ ज़्यादा फाइट्स देखोगे, कम अंडरस्टैंडिंग देखोगे, और ज़्यादा क्लेश देखोगे, ज़्यादा ऐसे लगेगा कि हम मिले तो क्यों मिले करके रिग्रेट्स आएगा, शेम आएगा, या
अनहैप्पीनेस आएगा या एंगर आएगा, समटाइम्स भगवान ऐसे करता ही है सिचुएशन क्रिएट कि ये सब रिस्पॉन्सेज आए वो रिलेशनशिप्स में, बिकॉज दोज रिलेशनशिप्स माइट नॉट बी इधर हैपनिंग एट द राइट टाइम फॉर अस, और द फिज़िकल एस्पेक्ट्स जो हम कर रहे थे फिज़िकली, अगर कोई सो रहा है किसी के साथ, वो राइट टाइम पे नहीं सोया, मतलब कुछ चल रहा था गड़बड़ उनके बॉडी में, माइंड में, सोल में, या उनकी लाइफ में ही कुछ गड़बड़ चल रहा था जिसकी वजह से द टाइमिंग वाज नॉट राइट. इसीलिए बहुत ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में अगर आप वीडियोस देखोगे ट्विन फ्लेम के टीचर्स के, उन लोग डिवाइन टाइमिंग करके बात करते हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही ये है कि आपको भगवान पे छोड़ना है कुछ कुछ चीज़ें. भगवान आपको आपका ट्विन फ्लेम अगर दिखा भी दे चुका है, बता भी चुका है कि यही आपका ट्विन फ्लेम है, वो आसान जर्नी इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पता चलने के बावजूद भी इतने सारे आपके लाइफ के फैक्टर्स आ सकते हैं वो रिलेशनशिप को के अंदर, जो एक एक करके आपको रिजॉल्व करना है. म्यूचुअली भी रिजॉल्व करना है कुछ कुछ, और कुछ कुछ चीज़ें इंडिविजुअली रिजॉल्व करना है सेपरेशन फेज़ में. इसीलिए ट्विन फ्लेम्स के सेपरेशन भी आते हैं. पर सेपरेशन फेज़ कब आएगा? तभी आएगा ना जब हम, या तो हमको क्लेश होगा, या तो हमको दुख होगा, या तो हम बहुत एंग्शियस हो जाएंगे, या तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, या तो हमको शेम फील होगा, या तो हमको बहुत गर्व फील होगा. मतलब जो भी है एक्सेस एक इमोशन फील होगा. जब हम ऐसे एक्सेस इमोशनल फेज़ में होते हैं ट्विन फ्लेम को लेके, जो बैलेंस्ड इमोशनल फेज़ नहीं होता, उस वक्त ऐसा होता है कि वो सेपरेशन का टाइम आ जाता है. क्योंकि हम एजिटेटेड फेज़ में अगर हैं, मतलब कुछ है हमारे अंदर जो हमको हील करना है, और हमको अगर हील ना करना है तो हमको ट्विन फ्लेम के साथ ही मिलके शायद फ्यूचर में उसको हील करना है. बट उसकी समझ आनी चाहिए ना हमें. तो जब तक हमको उसकी समझ नहीं आएगी तब तक हमको भगवान कुछ कुछ चीज़ों में चोटें पहुंचाता रहेगा, either via our twin flame or via our family or via our past relationships or via some toxic relationships which we fall into. बस कभी कभी लोगों को लगता है कि जब कोई ट्विन फ्लेम उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर देता है, वो लोग प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होते हैं. और बिकॉज वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होते हैं, या उन्होंने वो रिसीव करने का कैपेसिटी डेवलप नहीं किया होता है, या उनकी फैमिली लाइफ में उनको कभी मिला नहीं है वो प्यार उतना, तो उनके अंदर वो समझ ही नहीं आई है कि ये अच्छे सेंसेशन को हम कैसे प्रोसेस करें. तो ये सब कारणों से ये जो प्रोसेसिंग टाइम भी चाहिए रहता है ना किसी किसी इंसान को, तो वो प्रोसेसिंग टाइम कब आएगा? तभी आ सकता है जब शायद वो सेपरेट हो जाए उनके ट्विन फ्लेम से. और अगर वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है तब तो इतना भारी भारी सेपरेशन आ जाएगा कि वापस से आप वो इंसान के साथ मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देगा भगवान. क्योंकि भगवान भी चाहता है ना कि हमें वो इंसान मिले हमारे लाइफ में जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो. भगवान इज़ ऑलवेज गोइंग टू ट्राई टू मूव अस अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे लिए बेस्ट न है, या जिसके लिए हम बेस्ट ना हैं. उस चीज़ को हमारे लाइफ से वो निकाल देने की कोशिश करता है. तो वो तभी कोशिश करेगा जब हम या तो हमने कोई ऐसा चीज़ कर लिया जिससे हमको वायलेटेड फील हो, या किसी और ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे उनको वायलेटेड फील हो रहा है, या कोई ऐसा इंटेंस इमोशन आ गया जिससे दोनों को मतलब वो लड़का समझ पा रहा है शायद कि ये लड़की बहुत डीपली उससे प्यार कर रही है, बट वो उसको वो प्यार दे नहीं पा रहा है बिकॉज उसके अंदर अनहील्ड ट्रॉमा है. और वाइस वर्सा, या तो लड़का वो लड़की पे इंटरेस्टेड कभी था ही नहीं, मतलब उसका सिर्फ उस पर इंटरेस्ट सिर्फ एक मतलब था ही नहीं, मतलब उसको इंटरेस्ट था, उसने सोचा कि उसको इंटरेस्ट है इस लड़की पे, बट आफ्टर स्लीपिंग विद द गर्ल उसको जब वो स्लीप कर लेते हैं ना, और उसके बाद अगर आपको बॉन्डिंग महसूस न हो आपके पार्टनर के साथ, एंड इफ वो बॉन्डिंग इमीडिएटली अगर वापस आता नहीं है या टाइम लगता है वापस आने, एक पुश-पुल डायनामिक्स तो होता है कि सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन फ्लो जो वुमेन के बॉडी में फ्लो होता है उससे वुमेन गेट मोर बॉन्डेड विद द गाय. वेयर सेक्स के बाद अगर इफ़ द गाय डजंट फील दैट ऑक्सीटोसिन फ्लो एंड इजंट कम्प्लीटली एनर्जेटिकली इन्वॉल्व विद द गर्ल, वो लड़का फिर उससे इमोशनली अटैच नहीं होगा, उसका सेक्शुअल नीड ख़त्म हो गया तो उसका नीड फॉर दैट वुमेन फॉर दैट टाइम बीन गोज अवे. नाउ इफ़ इट इज़ अ quality relationship that develops over time, or if it is a marriage,
then the person doesn't escape. They will try to work it and everything. और if there was a deeper emotional, अगर वो लड़के के अंदर emotional प्यार है उस लड़की के ऊपर, then he will eventually realize, you know, how bad he has treated her and he will try to work through it. बट वो इमोशंस अगर डीपली अंदर से वो लड़का अपने अंदर ला नहीं पाएगा या ला नहीं सकता, जब तक वो ला नहीं पाएगा तब तक वो इस लड़की का परफेक्ट ट्विन फ्लेम पार्टनर हो नहीं सकता. तो इसीलिए उनके अंदर झगड़ा चला गया. ठीक है. एंड बायोलॉजिकल स्टफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज of coronavirus and because of other things that are going wrong on earth. Humans have to wake up to what they are doing wrong on earth. तो one of the things हम सब गलत कर रहे हैं कि एक्सेस केमिकल यूज़ की वजह से certain viruses, certain bacteria, some certain harmful viruses, bacteria and mold. And mold का ही fungus is basically fungus, mold, yeast, fungus, they're all come under the category of fungus. ठीक है. So all of these infections that people get, fungal infections from sexual relationships, yeast infection from sexual relationship, but is it just that you're getting it from a sexual relationship? You can get yeast and fungus infection even from the food that you're eating, even from a home environment or a hotel environment or a hospital environment where you are getting recovery from a disease. सो ये सब एनवायरनमेंट्स में पनप इसलिए रहे हैं क्योंकि हम केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल. तो जब तक लोग ये ना समझे, ये भी एक कारण था उनके झगड़े होने का. तो सबको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली फुल्ली समझना पड़ेगा कि जब झगड़ा किसी के साथ हुआ है कि किस कारण से हुआ है. आप अगर आपका झगड़ा अगर 3-4 कारणों से हुआ है किसी इंसान के साथ, तो आपको धीरे धीरे हर कारण को समझना पड़ेगा ताकि वैसा सिचुएशन और आप डेवलप ना कर सकें इन फ्यूचर विद दैट सेम पर्सन, राइट. इफ़ यू वांट अ क्वालिटी रिलेशनशिप विद समवन, एंड जो आपके कंट्रोल में है वही तो उसी बात के बारे में आपको भगवान इन्फॉर्मेशन देगा. एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स दैट कॉज पीपल टू फाइट विथ ईच अदर आर प्रेजेंट इन द थिंग्स वी आर डूइंग इन आवर लाइफ. नॉट जस्ट फंगल इन्फेक्शन, वो होटल्स में स्प्रेज भी बहुत मारते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे. तो उस केमिकल्स के भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं हमारे ब्रेन में दैट कैन कॉज एंगर टू अराइज एज वेल. सो there could have been many factors, and this is not just a case of this one particular couple. Many couples are there who, अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ तो मुझे भी दिखता है यहाँ पे फैमिलीज़ आए हैं रोमांस के लिए, कपल्स आए हैं रोमांस के लिए. इफ़ नॉट रोमांस, जस्ट फॉर अ वीकेंड गेट अवे, कपल्स कम आफ्टर ड्यूरिंग वेकेशन टाइम ऑफ देयर किड्स. तो सबको चाहिए कि प्यार तो हो, सबको चाहिए कि मिलजुल के रहे वो अपने फैमिली के साथ, पर वो तभी नहीं रह पाते जब या तो फंक्शनली कुछ आपका गड़बड़ चल रहा है आपके स्पाउस के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, लवर के साथ, और मतलब आप फंक्शनली कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे को समझने में, या तो इमोशनली कंपैटिबल नहीं हो, या तो फिज़िकली कंपैटिबल नहीं हो, वो भी इम्पैक्ट कर सकता है. और द फाइनल थिंग इज़ एनर्जेटिक कंपैटिबिलिटी. जो अगर एनर्जेटिकली गड़बड़ चल रहा है आपकी बॉडी में तो दैट इधर गड़बड़ चल रहा है और फ्रीक्वेंसी मैच ही गड़बड़ है, उसकी वजह से ये सब हो सकता है. सो प्लीज़ थिंक अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद समवन. दैट्स व्हाई पीपल कॉशन वुमेन मोर ऑफन टू नॉट स्लीप विथ मेन, because until you have judged and gauged whether this person is really truly interested in a deeper emotional level with you, it is better not to sleep around, because the consequences also of the sleeping around falls on the women, right? That's why only people caution women more to do this. But it's also high time now that men also start doing it because it's their responsibility as well. You can't just wash off your hands thinking that, I was in love with this person, that's why I slept. But there's a consequence if you have slept with someone. That consequence can sometimes show up suddenly in your life in the form of a pregnancy or in the form of worse other things if, the woman didn't have a good relationship with you, or if you're not a good lover. Then there are laws that you could have violated as well if you aren't understanding how a woman should be treated well. So respect for each other is very important. A woman needs to respect the man also, but the woman needs to understand the man also. And one way of understanding the man is
also understanding yourself, both. And twin flames are what? Divine feminine and masculine energy inside one same person. So आपके अंदर masculine feminine energy दोनों होगी, आपके पार्टनर के अंदर भी masculine feminine energy दोनों होगी. एंड इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को बनाया गया है ताकि वो masculine एंड feminine के नीड्स को, दोनों ही नीड्स को समझ सके अच्छे से. एंड देयर इज़ नो जेंडर बायस को निकालने के लिए और तोड़ने के लिए जो सोसाइटल जेंडर बायसेस क्रिएट हो चुकी है अब तक हमारी सोसाइटी में, उसको तोड़ने के लिए भी ट्विन फ्लेम्स आए हुए हैं. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, योर फाइट्स ऑल्सो विथ योर ट्विन फ्लेम और योर सेपरेशन फेजेस ऑल्सो विथ योर ट्विन फ्लेम विल इन्वॉल्व सर्टन थिंग्स लाइक दैट. सो आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव. आपको किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना. एंड इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. एंड आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन फर्दर वीडियोस. थैंक यू. हैव अ गुड नाइट.